Yes, good morning, students. Children, today we are going to do the application of compound interest formula, right? Application करनी है आज हमें compound interest formula की. अब हमने compound interest का formula अच्छे से कर लिया है. We know how to apply compound interest. If it is compounded yearly, if it is compounded half yearly, or it is compounded quarterly, right? Now some application of compound interest formula. Compound interest formula can be used to find the increase or decrease in the population. It can be used to find increase or decrease in population. It can be used to find the growth of a bacteria. If the rate of growth is given, if rate of growth is known to you, you can find the growth of the bacteria as well using the formula of compound interest. Then you can find the value of the item if its price increases or decreases in the intermediate year. अगर किसी भी आइटम का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो आप उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ इसमें. जैसे कि एक एग्जांपल है आपके पास, पॉपुलेशन ऑफ सिटी आपको गिवन है 1997 में 20,000 है. ये इंक्रीज हो रही है एट अ रेट ऑफ 5%. हमें फाइंड आउट करना है कि 2000 में इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, राइट? 1997 में it is given to you और आपको 2000 ईयर में फाइंड आउट करनी है, तो you can apply the formula of compound interest and you can solve it, right? Then next, one more example is there, and that is question number 12. A scooter was brought for rupees 42,000. एक स्कूटर आप 42,000 का लेके आए हो, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, मीन्स कम हो रही है at a rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. इसकी वैल्यू 1 ईयर के बाद फाइंड आउट करनी है. Here also you can apply the formula of compound interest, right? यहाँ पर भी आप compound interest का formula apply कर सकते हो. All right. Now next is आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10. एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन इज the population of a place increased to 54,000 in 2003. हमें क्या गिवन है कि 2003 में किसी जगह की पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है हमें, that the population of a place increased to 54,000 in 2003. means population कितनी है? Population in 2003 is 54,000, right? It is given that at a rate of 5% per annum. Rate of increase हमें कितना given है? 5%. Rate is given to us and the rate is 5%. All right. Rate is 5%. Now in the first part they are asking that what is the population in 2001. We have to find the population in 2001. हमें 2001 की population find out करनी है, right? अगर हम देखें तो 2001 और 3 में कितने years का gap है? Time कितना आ जाएगा यहाँ पे? Time is 2 years. 2001 और 3 की बात हो रही है, so time is 2 years. तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, population of 2003 की population हम कैसे find out कर सकते हैं? It is population of 2001, population of 2001 into 1 plus r upon 100 raised to per n, right? ऐसे ही आ जाएगा. अब हमें 2003 की पॉपुलेशन गिवन है, दैट इज 54,000. पॉपुलेशन ऑफ 2001 जो है, लेट इट बी x, इसको हम x ले लेते हैं. 1 plus rate here is 5 upon 100 raised to power 2. Now you can solve this equation. Hurry up, solve this equation quickly. Solve this equation quickly. आप इसको solve कर सकते हो ना, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी. 5 1 to 5, 5 2 to 10. So this is 54,000 is equal to x.
ये आ जाएगा आपका 21/20 रेज़ टू पावर 2। इसको सॉल्व करोगे 21/20 आ जाएगा। दिस इज 54,000 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21। तो यहाँ से x आ जाएगा आपके पास। Solve it quickly and give me the answer. Write your answer in the chat box. Hurry up. जल्दी से इसको सॉल्व करो और आंसर चैट बॉक्स में लिखो कितना आ रहा है आपका। Hurry up. Thank you, Asha ma'am. शिखा, आपसे मैंने आपको एक बात बोलनी थी बेटा। आप चलो, आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन। Come on, do the calculation and write the answer in the chat box. Do the calculation and write your answer in the chat box. Hurry up. Mankirat, you have written 59,535. That is wrong. प्रज्ञा 48,980। बेटे कैसे आया? आंसर्स तो डेसिमल में आना है। यस इशिता, योर आंसर इज करेक्ट। इट इज 48,979.59। So population in 2001 is 48,979.59। तो इसको राउंड ऑफ करोगे, this comes out to be approximately. I hope it is clear to everyone. Now इसका second part है। Now we are discussing second part of this question. In second part we have to find the population in 2005. हमें क्या find out करना है? Population in 2005. Now first of all, population in 2003. What is population in 2003? It is 54,000. Rate is 5%. Rate is 5%. Now time कितना हो गया? Because we have to find the population for 2005. So 2 years again, right? So population in 2005 will be population in 2003 into 1 plus r upon 100 raised to power n. So population in 2003 is 54,000 into 1 plus 5 upon 100 raised to power 2. Now you can do the calculation and you can write your answer in the chat box. Do the calculation and write your answer in the chat box. Hurry up.
Come on, do the calculation.